Good afternoon, everyone. I hope you guys are doing great. Guys, काफी लोगों ने सुबह ज्वाइन किया होगा. Please write yes in the chat जिन लोगों ने भी किया है. उसके बाद में आपको काफी सारे नो यस ओके. तो गाइस आप लोगों ने BTST या इंट्राडे तो आपने लिया ही होगा सुबह जो हमने दिया था कैस्ट्रॉल पे. तो कैस्ट्रॉल तो तभी हमें 5 से 7 पॉइंट्स का हमें मोमेंटम दे दिया था. तो आई होप यू गाइस हैड बुक द प्रॉफिट इन कैस्ट्रॉल. अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट का ओवरऑल सेटअप तो अभी भी फ्लैटिश ही लग रहा है. जो ओपन हुआ था मार्केट तब से लेके अभी तक इट्स ट्रेडिंग साइडवेज. So let's wait for Nikun sir. We have Nikun sir with us today. Let's see how it goes. या तो हम पुट साइड पे करेंगे ट्रेड या we will play with some strategies. Rightly said जयदेव जी, we have got a flat day. So यही होगा मेन टारगेट आज का हमारा कि हमारे एक्सपर्ट्स आज ऐसे चॉपी मार्केट में ऐसे नो मोमेंटम मार्केट में कैसे हम प्रॉफिट कर पाए. So let's wait for Nikun sir today. Atul ji will definitely take your queries as well. Jaydev ji, Piramal Pharma, आप please maintain the stop loss that we had suggested. उसमें एक Piramal Pharma आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा है. Please maintain the stop loss and hold. Nikun sir, please let me know if I'm audible. Yeah, you are audible. Am I audible? Am I audible? Main जी Zomato for next week. Zomato technically looks very positive. फिलहाल थोड़ा consolidate हो रहा है guys. Just wait and hold for if you are looking for a long term view. Audible but not visible. Jaydev ji, please exit and rejoin. Maybe some technical issue from your end, guys. Please write yes if I'm completely audible and visible to you. Great, thanks for the confirmation. जतिन जी, डेफिनेटली हम लोग आज पूरी कोशिश करेंगे आज प्रॉफिट हो जाए. निकुंज जी, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yes. Am I audible? Yes, you are audible now. Your screen is also visible. Your Okay. camera is turned off. So we can start then. We are good to go. Sure. Over to you, Nikunj sir. Okay. Okay. So good afternoon, everyone. Good afternoon, Avinash, and welcome to the first weekly expiry of the September month. So start करते हैं again of all the indices. Nifty से start करते हैं. Nifty, as we have seen, historic run है 13 trading sessions of positive close so far. और आज भी थोड़ा सा flattish trade कर रहा है. Almost 13 days का positive momentum has been continued. And we have scaled to fresh lifetime highs of 25,333. तो हम almost 50-60.2% नीचे है, लेकिन overall setup bullish ही है. Previous all time high को surpass करने के बाद almost 250-300 points का एक fresh swift momentum आया है in the Nifty index, wherein 25,078 was the previous lifetime high, and we have crossed that and we are sustaining above that. तो जब तक सेटअप वाइज नियर टू मीडियम टर्म में जब तक 24,900 नहीं ब्रेक करता है नीचे में, तब तक आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू बी ऑन द पॉजिटिव साइड. एंड बैंक निफ्टी की अगर बात करें, इट हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग. थोड़ा सा साइडवेज है बैंक निफ्टी, लेकिन कंसोलिडेटिव है. सो लेकिन नीचे के लेवल्स होल्ड कर रहा है. तो जब तक 50,800 ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक 50 के ऊपर है, तब तक 51,800 and 52,200 is easily scalable. But थोड़ा सा momentum missing है on the higher side. But important part is that support based buying is continuing in bank nifty. तो जब तक 50,800 के ऊपर है, तब तक there are huge probability that will scale to 51,800 and 52,200 on the higher side. But the velocity of the move would be slower, as it has been underperforming the Nifty index.
फिर निफ्टी की बात करें जिसकी आज एक्सपायरी है तो विल कम टू दैट। आज सुबह से देखा है कि एक थोड़ा सा रेंज्ड मोमेंटम है इन फिन निफ्टी। ऊपर से जब जो ओपन हुआ था ऑलमोस्ट दैट वाज द हाईएस्ट पॉइंट 3,770, वहां से स्लो एंड स्टेडी डाउन टिक आया है, बट नीचे से अच्छी रिकवरी देखी गई है वेर इन दी आवर्ली स्केल पे ऑलमोस्ट हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बना है। जो आवर्ली स्केल अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो, और वहां से थोड़ा सा मोमेंटम पिक हुआ है जहां, और मेजर कंपोनेंट में से आईसीआईसीआई बैंक हैज बीन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और अभी एज वी कैन सी आईसीआईसीआई इज मेकिंग डेज हाई। तो 23,728 है अभी स्पॉट लेवल में, और उसका वीकली वीवैप है 23,725। सो वी आर ऑलमोस्ट नियर द वीकली वीवैप, सो which clearly says that buy and decline stand should continue, but upside थोड़ा सा momentum missing है, but we'll try to gauge some trade out of it. So as of now the strike that is on our radar is FINNifty का 23,650। तो 23,650 का कॉल ऑप्शन जो अभी कोट कर रहा है 76-75 के आसपास। तो द रेंज दैट वी आर वर्किंग विद फॉर द लास्ट आवर इज 23,680 और 23,750। तो इससे 70 पॉइंट्स का मूव दैट वी आर प्लेइंग विद ऑन द लास्ट एक्सपायरी प्ले, जो लास्ट आवर के लिए ट्रेड कर रहे हैं। जो हम लेवल्स देख रहे हैं दैट इज 23,680 एंड 23,750। तो ये एक 70 पॉइंट्स का बैंड है, तो विल ट्राई टू वर्क समथिंग इन बिटवीन दिस ओनली। तो वी आर प्लेइंग विद द इन द मनी ऑप्शन दैट इज 23,650 कॉल। तो एज ऑफ नाउ इट इज कोटिंग एट 75-76। can buy we are giving the range, can buy between 65 to 70. So we'll wait for a dip, quick move आया है तो we'll try to let the premium get cooled off. तो 65 to 70 के बीच में we'll try to enter and we'll keep a stop of 50. So you can pin the message FINNifty का 23,650 का call option. We'll try to buy between 65 to 70, keeping a stop of 50, and we'll look for a higher target towards 95 and 110. So we'll try to play with the cool off in the premium. थोड़ा सा एक sharp optic आ गया है, so we'll try to wait for a small dip. There is no point chasing the option premium. कोई ऐसा major thrust नहीं है क्योंकि almost 80 points का ही 130 points का ही intraday range रहा है. So try to wait for a dip, but almost sharp uptick. ICICI Bank has been leading from the front. The option as premium is 120 now, so it's very difficult to get into it. So, sir, yeah, हमने सुबह 2 BTS दिया था. Could you please update on that? okay. What was that? Sorry, the intraday. One was ITI and another was Cash on India. I think we'll wait. I think the momentum थोड़ा सा option में है, तो we'll wait for the trade setup. अगर वो होता है तो, and we have enough time in the end to take the queries if that is okay. Sure, Nikun sir. Yeah, so I think we'll wait for the momentum. थोड़ा सा है, ICICI Bank has been leading, तो थोड़ा सा premium में spike आया है. तो as of now 23,650 call option 105-103 है. So we'll wait for the dip only. We are no in a hurry to get into the trade. So we'll wait for our levels to come and we'll see how it goes. So our buying range था 65 to 70. I think we'll wait for 2-3 minutes. अगर range shift करना है तो we'll definitely update on the same. But as of now, तो call option ने high किया था 130 का, अभी 97 है. तो almost 40 points ऊपर से cool off हुआ है. तो which is why I don't think it makes any sense to chase the premium as of now. So we'll wait for our price only. So in the meantime, I think we'll go about with your stock that you were asking.
So it wasn't a stock queries, Nikunj sir. हमने सुबह 2 इंट्राडे ट्रेड दिया था. Okay. पीयूष सर ने हमें सजेस्ट किया था. One was ITI and another was Castrol India. ITI. ITI, right? Okay. So ITI आपने इंट्राडे दिया था ना अपन. Right. I think 301 का लो किया है. तो अगर इंट्राडे है तो I think you should book your profit, or if you're making small loss then you should exit. अगर purely इंट्राडे है तो अगर सेटअप वाइज तो ठीक ही है. अगर 290 जब तक होल्ड कर रहा है 295 तब तक सेटअप वाइज तो ठीक ही है स्टॉक. And which was the other one? Castrol. Castrol India, right? Okay, Castrol तो I think it is doing good only. अच्छा रिवर्सल है. अगर इंट्राडे में आपको प्रॉफिट बन रहा है तो you should take the profit. अगर आप होल्ड भी करते हैं तो अगर 260 के स्टॉक से होल्ड भी कर सकते हैं ऊपर में 275 और 280 के टारगेट्स के लिए. So intraday if you're making money you can exit. अगर if you want to continue to hold for a higher target then you can keep a stop of 260. Sure. So Nikunj sir, let's move ahead with the stock queries. Yeah, fine. If there is any update with regards to the trade, I'll definitely intervene and get back to that. अगर हमारा buying range, if you want to change or थोड़ा सा ऊपर करना है तो I'll definitely update on the same. Sure. So Jaydev Singh has bought 25,300 call. What is your view on that? 25,300 call. That is Nifty. Yes. क्या प्राइस पे लिया हुआ है? So we'll move ahead. Jaydev ji ने properly mention नहीं किया. So what is your view on BDL? BDL. Yes. I think BDL, all the defense stock has been consolidating. ऊपर से थोड़ा cool off आया and the momentum is clearly missing. थोड़ा सा sideways हो गया है. तो नीचे में जब तक अगर trading position है तो 1280 should be your stop और उससे hold कर सकते हैं. अगर थोड़ा सा medium to long term है तो I think you should keep a stop of 1150 and hold. But the momentum is clearly missing in all the defense stocks, be it HL, BDL, BEML, PEL. So थोड़ा सा sideways हो गया after a strong run up. So I think the momentum is clearly missing in BDL. Keynes. Okay. I think 23,700. I think 23,700. I'll just check. So Teja, I think I'll just revisit the option trade. Teja 700 ka call option is currently quoting at 68, and the spot is 2770. So it is in the money by 70 points, right? So I think 23,700 पे हम shift होते हैं. I think 23,700 का call option FINNifty का weekly वाला. I think we can buy between 55 to 60. I think 55 to 60 is a good level. So we have changed the strike only. So 23,700 का call option weekly का 23,700 call option FINNifty will buy between 55 to 60. We'll keep a stop of 45. So you can pin that message now. I think the previous one won't work. Nikunj sir, what will be the target? The target would be 90 and 110. 55 to 60 is the buying range, keeping 40 as a stop. Great. So guys, हमने अभी 23,650 कॉल के जगह से हमने 23,700 कॉल पे शिफ्ट हुआ है. And please focus on the 23,700 call. The buying range will be 55 to 60 with a stop loss of 45, upside पे 90 से 110. With market में momentum थोड़ा सा है तो yes. There is momentum and it is solely and single-handedly led by ICICI Bank. एक strong move आया है नीचे से. कोटक बैंक थोड़ा सा support कर रहा है लेकिन ICICI has been leading from the front. So major component थोड़े से sideways ही है. Be it Bajaj Finserv, Finance, HDFC Bank
and Axis Bank, these are trading weak. But those stock जो Kotak Bank है and ICICI Bank, these are trading strong, which is why थोड़ा सा strong uptick आया है नीचे से. So we'll wait for the price only, that is the buying price that we have mentioned, and the stop loss. उसके हिसाब से we'll play. We don't want to chase the high price. I don't think it is not that all the stocks are leading from the front and there's a big momentum that is being built up. It's just ICICI Bank which is gaining, and that is the only index weighted stock that is moving towards the desired. Others, HDFC Bank, ICICI Bank, Bajaj Twins are not that supportive as of now. So we'll wait for a trade setup, I think. So रौनक जी, we are losing momentum due to रौनक जी, वैसे मार्केट में बहुत कम मोमेंटम है सुबह से ओपनिंग से लेके अभी तक पूरा फ्लैटिश. So we are trying to enter in such a range जहाँ पे हमारा risk to reward भी favorable रहे. Exactly, because there is no point chasing the highest price and then keeping a stop of 40 points and then hoping that it works. Right. So Nikon sir, do we have any BTST, some trade or delivery that we can carry forward? I think one stock is SBI Life. I think if we can check, I just do it. SBI Life is a fantastic stock. I think SBI Life all-time high stock hai, and I think this is a good BTST candidate as well. So SBI Life, one can do a BTST. 1910 12-15 है अभी, तो 1880 के स्टॉक से we can do a BTST in SBI Life, keeping a stop of 1880 and look for 1945 and 1970 on the higher side. So SBI Life is a good BTST candidate where the strong breakout है डेली स्केल पे, 3 दिन का साइडवेज था और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वापस बिल्डअप हो रहा है. तो आई थिंक ऊपर में 1955 and 1970 के टारगेट के लिए we can look for SBI as a BTST trade. A classical breakout है और all time high stock है, so momentum is clearly there in the stock. So again हमारे back to our option, I think it is trading at 93, 97 as of now. Bajaj FinServ ने थोड़ा सा एक momentum pick up किया है, and even the other NBFCs थोड़ा सा नीचे से momentum pick किया है, but option as of now 23,700 call option है, 90 में ही है, तो I think 87, 90, 91. So we'll wait for the dip, I think. So meanwhile, Nikon sir, कुछ queries ले ले हम लोग. Sure. Sure. So what is your view on Cochin shipyard? I think Cochin, all the शिप बिल्डिंग या थोड़ा सा मोमेंटम पिक हुआ था, लेकिन ऊपर से वापस कूल ऑफ आ गया है. आई थिंक द मोमेंटम इज क्लियरली मिसिंग इन दैट. तो आई थिंक अगर आपका पोजीशन है तो कीप अ स्टॉप ऑफ 1820 एंड होल्ड लॉन्ग्स इन इट. अगर नहीं है तो वेट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी. आई थिंक थोड़ा सा मोमेंटम मिसिंग है इन ऑल दी शिप बिल्डिंग, बीट कोचिन, मजगांव, जीआरएससी, ऑल द इंडेक्स, ऑल द स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटम मिसिंग है. ऊपर से कूल ऑफ काफी स्ट्रांग है, तो वेट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी. अगर है होल्ड आपका पोजीशन है तो 1820 के हिसाब से होल्ड कीजिए. We have a query from Bhavesh. He bought UCO Bank at 27 rupees. Target and stop loss view 5,000 share holding. I guess you bought at a very great price. Yeah, I think your entry point is good. So I think you can keep a stop of 40 and continue to hold. ऊपर में slow and steady 65 के लेवल जा सकते हैं. So your view on Dixon Technologies? Just a moment. Just a moment. Dixon Tech, right? Right. Okay.
So I think I'll revisit the trade 23,700 का call option वापस 90 के आसपास है. I think our range was 55 to 60. So we'll wait for that, or we can change it to 60 to 65 or 68, 60 to 68 के बीच में, and keeping a stop of 50. Right, we have changed the range 60 to 68, keeping a stop of 50, and look for over 100K target. What we can do is 750. So guys, we have revised the buying range from 55 to 68. I mean, from 60 to 68 will be the buying range with the stop loss of 50, and the upside target will be same 90 and 100. So Jaidev Singh, नहीं मिलेगा कुछ का. Jaidev ji rightly said, but we also want to make sure कि हम higher side पे entry ना करें. Exactly. तो reward में नहीं होगा. So let's wait for some cool off. So coming back to the stock queries, Nikunj sir, your view on NBCC. Emphasis. And NBCC आफ्टर अ गैप अप एक थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, तो स्टॉक में एक बोनस भी अनाउंस किया है 1:2 के रेशियो में, तो आई थिंक यू विल गेट द बोनस अकॉर्डिंगली. सो ऊपर में 190 के टारगेट के लिए यू कैन लुक फॉर कीपिंग अ स्टॉप ऑफ 180 एंड लुक फॉर 195 ऑन द हायर साइड. BEL. I think BEL again same like BDL थोड़ा सा साइडवेज ही है, ऊपर से कूल ऑफ हुआ है, लेकिन अभी मोमेंटम इज मिसिंग. तो जब तक 290 के ऊपर होल्ड कर रहा है, आई थिंक आपका लॉन्ग पोजीशन है तो 290 के स्टॉप से होल्ड कीजिए. अगर नहीं है तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर अ बेटर एंट्री पॉइंट. थोड़ा सा साइडवेज है, मोमेंटम मिसिंग है, तो डोंट गेट इनटू. एक मोमेंटम विल पिक अप ओनली अबव 310, so wait for that level. Nika new entry level, fresh entry level. I think नाइका एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न आज बना है, तो नीचे में अगर कोई लेना चाहता है तो आज के लो के स्टॉप से ले सकता है. 204 के स्टॉप से एंट्री कर सकते हो. लुक फॉर 215 एंड 218 ऑन द हाई साइड. Ronak ji change the trading stance. Ronak ji will definitely try. We have considered that. काफी लोगों का request आया है, so we will consider that. Your view on RIL? Just a moment. RIL, right? Bought at 3060. RIL is Reliance, right? Basically. Yes, Reliance. Sorry. 3060. Right. Okay. So I think थोड़ा सा बेटर ऑफ है स्टॉक, लेकिन थोड़ा सा साइडवेज है, तो 2980 के स्टॉक से होल्ड कीजिए. I think I will wait for the trade. I think just a moment. We'll change the strike. Right, Nikunj sir, because it's already trading at 120. Yeah. Weekly or 27. Oof. 750 का call. I think FINNifty का 23,750 का कॉल ऑप्शन है, अभी है 83 है. So what we can do is we can play it as a, what is it, not hero zero, but last 5 minutes के लिए ट्रेड सेटअप के हिसाब से देख सकते हैं. Current price is 80.83. We can buy at current market price, keeping a stop of 20 points and look for 110, 120 on the higher side. So 23,750 का call option, current market price is 80, keeping a stop of 60. You can look for 110 on the higher side. So guys, we have again
revise the strikes. We have shifted from 23,700 call to 23,750 क्योंकि हमारे बाइंग रेंज में नहीं आ रहा था वो. Yes. So हम अभी 23,750 कॉल में एंटर करेंगे to buy near at the current market price only, the range of 80 to 83 with a stop loss of 60 and the upside will be of 100 to 120. Yes. तो एक थोड़ा सा अपटिक तो आया है. तो 103, 105 हुआ, 106, 110. So I think our first target has been quickly met. 115. Guys, I hope आप लोगों को एंट्री मिल गया होगा. Great. So I think almost our second target of 120 was almost it. 117.90 का हाई किया है. I think momentum is clearly there. This call can touch almost 130, 140 also. So I think अगर किसी का है जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से वेट कीजिए, 100 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए ऊपर में. I think it can scale higher. कोमल जी came till 8380 and जिन लोगों को भी एंट्री मिल गया है and they made profit, congratulations. और जिन लोगों को नहीं एंट्री कर पाए, don't enter at the current level, wait for some dip. Yeah, so 125 का हाई किया है. तो आई थिंक अगर ट्रेलिंग स्टॉप कोई कर रहा है तो कीप अ स्टॉप ऑफ 100 or 102 so that you can exit in the money. So at least आपका लॉस ना हो. So we have changed the strike 3 times. So the third time we got lucky. We asked to buy the current market price, जो price है उसके ऊपर ही buy करने बोला था. Keeping a stop of 60, that is 20 points का stop था and 40 points का reward था. तो 80 से 120 का 125 का हाई किया है, तो 40 points का एक swing आया है. तो I think third time we got lucky and we didn't wait it for the dip. We asked to buy at the market price as the momentum was too quick to wait for the dip. Great. Congratulations guys, जिन लोगों ने भी profit book किया है. Nikon sir, do we have any other thing that we can do for the people जिन लोगों ने भी एंट्री नहीं ले पाए? They missed the opportunity. Can they enter at the current 90? No, don't get into at current market. Current market अभी क्योंकि क्या है 3 बजे के लिए almost 2 मिनट ही बचा है. तो I think थोड़ा सा cool off आ सकता है after a sharp run up. Then अपने जब सेशन स्टार्ट किया था, the spot level was 23,724. तो वहां से almost 120 points का एक swing आया है. तो एक थोड़ा सा और cool off आ सकता है. So don't get into it at the highest point and then regret buying at the high price. So I think wait for say 80 के आसपास मिले तो you can buy. अगर किसी को लेना ही है तो don't get into at high price because there is no point buying at something at 110 and then keeping a stop of 40-50 points. So risk reward is not favorable. Right. So guys, जैसे निकोन सर ने कहा कि don't enter at the higher levels because you might lose your capital. क्योंकि अभी फिलहाल हमें 3 बजे के टिक में डिप दिख सकता है. एक करेक्शन, so wait for that. अगर आपको 80 के रेंज में मिलेगा अगर वो टाइम प्राइस है तो you can enter and look for 10-20 points upside. Yes. But eventually हमने ये ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लिया है. Yes. Our target was met at 120 and 125 का हाई किया है. So when we started, we waited for 23,650 का call option, then we shifted to 23,700, and then eventually 23,750 call we asked to buy at the current market price. So I think the message was quite loud and clear. And BTST, I think we have shared one SBI Life, which is doing good. I mean, 915 था, 1915 था, अभी 1928 है. So I think even that BTST trade has worked 10-12 points का एक swing आया है in SBI Life as well. So Nikon sir, after 3 PM tick अगर हमें कोई dip दिखता है, if people are asking that to enter at the 80 level, what should be the target? Considering 5% का नीचे stop loss अगर हम लोग पकड़े भी, what should be the upside? I think अगर नीचे में 80 में आता है तो keep a stop of 65, 15 point का stop and keep a target of 30-35 points. Great. अगर आता है तो. Saurav, I hope this answer your question. Which indicators you are using, Nikon sir? I think the one on the right, ये chart पे RSI है और volume का है. So I
more than indicator, it is the price pattern and the component of the index are the more important. Whenever I start or we start the session, हमेशा we try to gauge with regards to the index weightage जो जिसमें ज्यादा है. I always say ICICI Bank, HDFC Bank कैसे क्या कर रहे हैं. तो जिसका weightage है और जो stock momentum में है, तो accordingly you have to gauge with regards to the index component किसका weightage है. So अगर 5 stock का heavy almost 80% component is taken care by 5 stocks, तो उनमें से 4 में तेजी है, तो it will be definitely तेजी only. So there are a lot of things that you need to take care. हमारा option almost 140-143 का हाई किया है. Right. तो सौरभ जी, जो आपका क्वेश्चन था to enter at the 80 level, I don't think so it will come to 80 now. So I will avoid from this side. And जिन लोगों ने भी अगर होल्ड किया अभी तक, please book your profits and exit short your positions. Definitely. So it was overall a profitable session, Nikun sir. Yes. Everyone. So Nikun sir, let's take 1 or 2 stock queries and we'll end up the session. Sure. So sale bought at 150. What is your view on it? तो सेल थोड़ा सा कंसोलिडेटिव है, ऊपर से थोड़ा सा करेक्टिंग मूव आया है. तो जब तक 125 होल्ड कर रहा है तब तक आई थिंक एक ऊपर 137 140 की जगह है. 125 ब्रेक कर रहा है तो थोड़ा सा वरीसम है, लेकिन थोड़ा सा साइडवेज है. वीकली स्केल पे आफ्टर सपोर्ट जोन से अच्छा घुमा है, तो 125 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और बेस भी है. तो जब तक 125 के ऊपर है, आई थिंक 140 142 ऊपर में आ सकता है. Okay, so this will be the last query, guys. NMDC bought at 100. What should I hold for a long term or shift to another stock in that sector? I think अगर NMDC अगर मेटल स्पेस में ही आपको रहना है, तो I think I would suggest switch to Hind Copper. I think Hind Copper अगर आपका 2-3 years का time horizon है, तो it should do outperform NMDC. So I think अगर आपका 2-3 years का time horizon है, तो I would advise to shift to Hind Copper. It can do much better than NMDC. NMDC खराब नहीं है, but अगर if you ask me, I would rather have you shift to Hind Copper. Okay. So that's it, guys, from our end. Thank you so much, Nikun sir. It was a great session. काफी strikes हमने change किए. Eventually हमें profit मिल गया. So that was a really good thing that happened today. काफी strikes change करने के बाद. Exactly. 3 बार game shift and third time we got lucky on that. Right. So हमारा मेन मोटो जो था प्रॉफिट करने का, गाइस, आई होप वी अचीव्ड इट एंड डिलीवर्ड इट. जो आप लोग कह रहे थे कि यू गाइस आर फेसिंग लॉस, तो हमने कल भी प्रॉफिट किया था, आज भी वी मेड प्रॉफिट इवन आफ्टर हैविंग अ वेरी फ्लैटिश मार्केट सुबह से ओपनिंग से लेके टिल नाउ. सो रियली अप्रिशिएट निकुंज सर एंड थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग. इट वाज अ ग्रेट सेशन. आई होप काफी लोगों ने प्रॉफिट किया एंड काफी लोगों को एंट्री नहीं मिला. सो डोंट फॉरगेट, वी हैव एवरीडे एक्सपायरी सेशंस. हम लोग हर दिन एक्सपायरी सेशंस करते हैं. So make sure you join us tomorrow also in the BankNifty expiry. And कल हमारे सुबह morning session में भी सुबह 9:30 बजे. So thank you guys for joining. Thank you, Nikun. Thank you, Avinash. Thank you everyone for joining in and have a good day.